Metabolic changes, yes, metabolic changes of drugs. Okay, metabolic changes of drugs or metabolism of drugs. Okay, so I will explain as medicinal chemistry point of view. So I think introduction, definition, general pathway for drug metabolism, site of drug biotransformation, role of CYP450 enzymes and classification. Okay, so ये metabolism क्या होता है? I have already explained. Metabolism is nothing but the inactivation of drug or inactivation of xenophytics. I have already explained this. So what is the result of metabolism? So it may be either activation of drug that is product, or inactivation of drug, generation of active metabolite of your active drug, or generation of active metabolite to your active drug having different activity, then generation of more toxic or carcinogenic drug, or generation of more toxic metabolite of toxic drug. Okay, I think I have already explained this. Then yes. So what is the site for metabolism? Okay, so liver is the main organ for metabolism. Okay, and in the liver also there is a microsomal enzymes. Okay, in the liver there are microsomal enzyme system. I have explained this. That is the main site for metabolism. Along with that, your kidney has some role in the metabolism, particularly in the proximal tubule. Lungs also have lungs will also metabolize some part of drug. Testis, in the testis Sertoli cells are there, they can metabolize, they have capacity to metabolize the drug. In the skin epithelial cells have capacity. Then plasma में जो enzymes होते हैं they can metabolize the drug. Then again brain also, in the brain tissue there is also ability to metabolize the drug. Intestine है, ये सब है. So all the enzymes for metabolism, they are divided into two types: microsomal enzymes and non-microsomal enzymes. I have already given some information regarding this. So in the microsomal enzyme, the endoplasmic reticulum, especially smooth endoplasmic reticulum of liver and other tissue, contain large variety of enzymes. Together they are called as a microsomal enzymes. Okay, microsomals means they are having microsomes. They are the little spherical vesicle in which there is a storage of these enzymes, and they are released after disruption. Okay, that's why they are known as a microsomal enzymes. Then non-microsomal enzymes occurring in the different organelle sites other than the endoplasmic reticulum. Okay, they are called as a non-microsomal enzyme. They are present either in the cytoplasm, mitochondria, etc., etc. So there are two types of enzyme: microsomal and non-microsomal. Microsomal enzyme, they are specific in their action, but non-microsomal enzyme, they are not specific in their action. Right? They are usually non-specific enzymes that catalyze few oxidation reactions, number of reactive and natriuretic reactions, and conjugation reactions. Now phase first, phase second, I have explained that. Phase first is known as a functionalization reactions. Phase second is known as a conjugation reaction or synthetic reaction. So in the phase first, what happens? There will be oxidation, reduction, and autolysis. There will be oxidation of aromatic compounds, olefins, benzylic acids, alicyclic, carbon-carbon heteroatom, N oxidation, S oxidation, that is known as sulfoxidation, nitroxidation. Okay, then reduction reactions will be there. Reduction of aldehyde ketones, nitro, azo compounds will be there. Then hydrolytic reactions will be there, like hydrolysis of ester, amides. Okay, ये भी मैंने explain किया था, I think. Phase second reaction, glucouronic acid conjugation, sulfate conjugation, glycine conjugation. So phase second में glucouronic acid conjugation होता है, sulfate conjugation होता है, glycine glutamate conjugation, amino acid conjugation will be there. Glutathione conjugation, marker-to-puric conjugation. Glutathione conjugation is very important. This is very important in case of paracetamol. So paracetamol का एक toxic metabolite होता है जो hepatocyte को damage करता है, hepatotoxicity करता है. That is known as a para-hydroxybenzoquinone imine, and that metabolizes conjugated with this glutathione or marker-to-puric acid, and then it is removed. But what happens during paracetamol poisoning? There is a depletion of glutathione level. Okay, so you have to supply glutathione externally. So in that case, in case of paracetamol poisoning, we are using N-acetylcysteine as an antidote. आपने कहाँ पे पढ़ा भी होगा, मुझे मालूम नहीं. N-acetylcysteine, so that will provide a glutathione, so that the glutathione will combine with the toxic metabolite and it can be excreted. Okay, so it was out of context. Okay, again that was the question, लेकिन वो भी क्वेश्चन था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की मैंने, लेकिन वो क्वेश्चन था. देन फेज सेकंड में और एस्टाइलेशन मिथाइलेशन रिएक्शंस होते हैं.
तो फेज फर्स्ट का एम क्या है कि जो नॉन पोलर लिपोफिलिक कंपाउंड है उसको पोलर बनना है, लेकिन उसमें बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है. सो मोस्ट ऑफ द polar groups are added in the phase first. Okay, but true lipophilic compound is converted into polar compound in the phase second. So phase first में either there will be inactivation, either there will be activation, either there will be generation of active metabolite. Okay, all those processes will be in the phase first. But in the phase second, after phase second metabolism, there will be no generation of anything. There will be generation direct. There will be excretion of that molecule. फेज सेकंड में अगर मेटाबॉलिज्म होने के बाद डायरेक्ट उसको एक्सक्रीट किया जाता है. फेज फर्स्ट में मेटाबॉलिज्म में हो जाएगा आपका जनरेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट, जनरेशन ऑफ एक्टिव ड्रग फ्रॉम प्रोडक्ट, जनरेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट व्हिच इज हैविंग डिफरेंट एक्टिविटी, जनरेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट फ्रॉम टॉक्सिक ड्रग. ये सब फेज फर्स्ट में होगा. फेज सेकंड में क्या होगा, डायरेक्टली एक्सक्रीशन होगा. तो ये सब जस्ट वो सब सेम एग्जांपल्स है, सभी सेम, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर देके एक्सप्लेन किया है, बाकी कुछ नहीं. Inactivation of drug. Okay, metabolism will result in inactivation of drug or detoxification. For example, here is a phenol. Okay, so phenol is converted into this phenyl hydrogen sulfate molecule, that is inactive molecule, by phenol phosphokinase, that is the enzyme. Okay, so there is a detoxification of phenol. अगर आप phenol लेते हो तो उसका detoxification in this process, by this process होगा. ठीक है, ठीक है. जनरेशन ऑफ सिमिलर एक्टिविटी ऑफ ड्रग, मतलब एक ड्रग उसका जनरेशन ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट हैविंग सिमिलर एक्टिविटी. तो यहाँ पे एग्जांपल है आपका डाइजेपम. सो यू हैव अ डाइजेपम. डाइजेपम इज अ सेडेटिव हिप्नोटिक. इट इज कन्वर्टेड इनटू टेमाजेपम बाय हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन होगा. यू कैन सी हियर एट दिस पोजीशन देयर इज नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो इट इज नथिंग बट द 1 2 3 थर्ड पोजीशन. ओके, it is the third position. My mouse is on third position. Okay, so this nitrogen is nitrogen 1 2 3 4. Okay, so at the third position of diazepam there is no hydroxyl group, but after hydroxylation there is introduction of hydroxyl group third position, and this is known as a temazepam. So it is also a drug temazepam. इसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो मेटाबोलाइट बनता है उसके बाद में उसका रिलीज हो गया, उसका नाम दिया temazepam. So it is also active metabolite. Now after demethylation, उसका demethylation होगा. डीमेथाइलेशन मींस रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप. कहाँ से होगा, ये यहाँ से रिमूवल होगा. ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है ना, देखो नाइट्रोजन 1 पे मिथाइल ग्रुप है, सो इट विल बी रिमूव्ड, दैट इज नोन एज डीमेथाइलेशन. और डीमेथाइलेशन होने के बाद क्या होगा, नया मेटाबॉलिट बनेगा, दैट इज नोन एज ऑक्साजेपम. ओके, सो टेमाजेपम वाज हैविंग शॉर्ट ड्यूरेशन एंड दिस ऑक्साजेपम इज आल्सो हैविंग शॉर्ट ड्यूरेशन, बट दिस ऑक्साजेपम इज हैविंग डिफरेंट एक्टिविटी. दिस इज हैविंग एंटी sedative hypnotic is there, but in addition to that it has a anti-epileptic activity, oxazepam. Okay, so generation of active metabolite having different activity or generation of active metabolite having same activity. It is example. Different activity, generation of active metabolite which is having different activity. So iproniazide, I have explained this. Iproniazide, it is a structure of iproniazide. It is an antidepressant drug used in the treatment of depression. Okay, now after this metabolism iproniazide ND alkylation, there will be ND alkylation, मतलब नाइट्रोजन से अल्काइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा. ठीक है, कहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे ऊपर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है. ठीक है, ये प्रोपाइल ग्रुप है, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा. सो देयर विल बी रिजल्ट ऑफ न्यू मेटाबोलाइट. यहाँ से अगर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, CONH2 NH2. नाउ दिस मॉलिक्यूल इज नथिंग बट द आइसोनियाजाइड. दिस आइसोनियाजाइड इज एन एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी. सो मीन्स आपको ओरिजिनल ड्रग होता, आपका ओरिजिनल ड्रग था इप्रोनियाजाइड, इप्रोनियाजिन, एंड दैट वाज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंड आफ्टर मेटाबॉलिज्म इट इज कन्वर्टेड इनटू आइसोनियाजाइड, एंड दिस मेटाबॉलिट इज हैविंग एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी. सो जनरेशन ऑफ एक्टिव मेटाबॉलाइट हैविंग अदर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. इज दैट क्लियर? इट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पैक्ट, इट इज आल्सो वन ऑफ द फेट ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म की बात क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये सब पॉसिबिलिटी. ओके, देन अगेन generation of toxic metabolite, generation of more toxic or generation of toxic metabolite. So for example, this is a phenacetine. Okay, this is a phenacetine. It is a prodrug of paracetamol. Okay, phenacetine analgesic anti-inflammatory drug is there. Okay, इसका मेटाबॉलिज्म होगा आपका, इसमें दो मेटाबॉलिज्म होते हैं. एक तो ये कंपाउंड बनेगा फेनिटिडीन. तो ये फेनिटिडीन जो बनता है मेटाबॉलाइट, उसको भी एड्रेसिपिड है, दैट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. So this phenidine is a metabolite of this phenacetine, will have
megaloblastic anemia as a side effect. Again, this phenylephrine will be converted into this molecule. Here, hydroxyphenylephrine. It is a hepatotoxic. Again, it is a generation of toxic metal responsible for the hepatotoxic. जनरेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबॉलाइट, ये बस पास इफेक्ट जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है. और जो वट एवर मेटाबॉलिज्म दैट ऑकर्स इन द इंटेस्टाइन म्यूकोजा और इंटेस्टाइनल एंजाइम, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा हिपेटिक मेटाबॉलिज्म. क्योंकि वो एक्स्ट्रा हिपेटिक है. हिपेटिक मतलब क्या? लिवर. तो लिवर के बाहर हो रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा हिपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है. और उसमें भी कुछ ये एंजाइम होता है, CYP3A4 ऐसे एंजाइम, उसका भी एंजाइम होता है. बाकी का जो पार्ट है इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट स्टिल वी विल रीड इट. Isoproterenol, isoproterenol means it is a beta blocker used in the hypertension. Exhibit considerable sulfate conjugation. ये isoproterenol जो है वो सल्फेट कॉन्जुगेशन में होता है उसका GIT में. तो ये एक्स्ट्रा हिपेटिक मेटाबॉलिज्म. लीवोडोपा जो मैंने बोला था, क्लोरोप्रोमाजिन, इट इज एंटीसाइकोटिक ड्रग. डाइएथाइलस्टिलवेस्ट्रॉल, इट इज स्टेरॉइडल ड्रग. These drugs are also reported metabolized in the GIT. It is also extra hepatic metabolism. मीन्स ये ड्रग का भी एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है. लीवर में तो मेटाबॉलिज्म होता ही होता है, लेकिन लीवर के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म. ठीक है, क्यों होता है? बिकॉज देयर आर सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन. सो esterase, lipase, these are the enzymes present in the intestine, may be particularly important for carrying the hydrolysis of yeast drug. जो हाइड्रोलिसिस होता है, जैसे आप एंजाइम्स, जैसे आपका डोपामाइन है या फिर आपका जो एसिटिलकोलिन ओरली नहीं दे सकते आप. क्यों? क्योंकि एसिटिलकोलिन जब स्टमक में जाएगा तो उसका वहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि स्टमक में ये एंजाइम्स होते हैं. अगेन बैक्टीरियल फ्लोरा, जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है वो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, दे आल्सो कैन रिड्यूस द मेनी एजो एंड नाइट्रो कंपाउंड. लाइक मैंने एग्जांपल दिया था आई थिंक सल्फरसेलेजिन. तो ये सल्फरसेलेजिन जैसे इंटेस्टाइन में जाता है उसका ब्रेकडाउन होता है, उसमें सल्फरसेलेजिन का ब्रेकडाउन होता है सल्फर डायजीन में. सो सल्फर डायजीन एज एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी इन द इंटेस्टाइन इटसेल्फ. वहाँ से वो आप सब नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे जो डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है उनको मार देगा. ठीक है, तो इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक. देन इंटेस्टिनल बीटा ग्लूकोइराइड कैन हाइड्रोलाइज द ग्लूकोइराइड कॉन्जुगेट्स एक्सक्रीटेड इन द बाइल. ठीक है, ये सब छोड़ो. ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम का जो कैसे होता है वो भी मैंने बोला था, इसके बारे में थोड़ा सा है यहाँ पे. साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम लोकलाइज्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइट, द साइटोक्रोम P450 is the pigment that with carbon dioxide bound in the reduced form and that will absorb UV at a length of 450 nanometer. That's why they are known as a cytochrome P450. Cytochrome, okay, 450 means lambda max, P means pigment. ये हमने बोला है कि कौन सा एग्जाम्पल कितना मेटाबॉलाइज करता है, ये सब देखा है मैंने. CYP3A4 will metabolize maximum. अगेन यहाँ पे समरी है. ओके, सो phase 1 metabolism is known as a functionalization. In that you will have hydrolysis, oxidation, reduction. Right? In case of hydrolysis, you will have ester hydrolysis, amide hydrolysis, epoxide, arene oxide, and epoxide hydrolysis. In case of oxidation, there will be aromatic moieties, oxidation of aromatic moieties, olefins, bicyclic, alicyclic. Then carbon oxygen oxidation, carbon nitrogen oxidation, sulfur oxidation, like that. ठीक है, एन डीआल्काइलेशन, एन ऑक्साइड फॉर्मेशन, एन हाइड्रोक्सिलेशन, ये ओ डीअल्काइलेशन, एस डीअल्काइलेशन. डीअल्काइलेशन मींस रिमूवल ऑफ अल्केन. ओके, रिमूवल ऑफ अल्केन फ्रॉम ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन. हाइड्रोक्सिलेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप. ठीक है, ऑक्सीडेशन, डीसल्फरेशन, रिमूवल ऑफ सल्फेट ग्रुप, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्डिहाइड्स. ओके, ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में. रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड टू कीटोन्स. अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन होगा किसमें? अल्कोहल. राइट, तो aldehyde ketone will be converted into alcohols. Nitroazole compounds will be reduced, then miscellaneous. Okay, so all these are the phase first. Phase second reaction, conjugation reaction. Okay, conjugation reaction like glucuronic acid conjugation sulfate, glycine, glutathione, methylation, acylation. It is a summary of your metabolism again that we have seen just previous slides जो पहले देखा. तो ये देखो ऑक्सीडेशन, ये मेटाबॉलाइज कैसे हो रहा है. टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल एक ड्रग है, उसका मेटाबॉलिज्म है इसमें. ओके, सो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, तो इसमें क्या हो गया है? उसका हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है. इसमें हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है. कहाँ पे हो रहा है? ये देखो, ये मिथाइल ग्रुप है 7 पोजीशन का, इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड किया है.
So 7 hydroxy tetrahydrocannabinol. Okay, so cannabinol tetrahydrocannabinol is converted to 7 hydroxy tetrahydrocannabinol. अगेन उसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल, तो उसका अगेन रिडक्शन होगा, वहां पे क्या होगा, एसिड बनेगा, दैट इज अ 7 ओइक एसिड टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल. उसके बाद में ये ग्लूकोयूरोनाइड कॉन्जुगेशन के साथ ग्लूकोयूरोनाइड कॉन्जुगेशन होगा, तो ये ग्लूकोनिक एसिड. अब जो आपका जो ग्लूकोज होता है उसको अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, तो उसका ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड बनेगा. ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एसिड फॉर्म है. तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एसिड फॉर्म इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, उसको बोलते हैं ग्लूकोयूरोनाइड कॉन्जुगेशन. इज दैट क्लियर? सो नाउ दिस मॉलिक्यूल विल कंबाइन विद ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड इट विल बी. अब ये मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, फिर भी वो पोलर नहीं बना है, उसके बाद एसिड बन गया उसका, वो भी पोलर नहीं है, लेकिन फाइनली फिर क्या हो रहा है, ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड इसमें कंबाइन हो रहा है और बाद में ये पोलर बन के रिमूव कर दिया. सो पोलर आयोनाइजेबल एंड हाइड्रोफिलिक, द मॉलिक्यूल इज मेड पोलर हाइड्रोफिलिक आयोनाइजेबल इन द मेटाबॉलिज्म. इज दैट क्लियर? जो मेन एम है मेटाबॉलिज्म का, कि टू मेक अ कंपाउंड वाटर सॉल्युबल, दैट इज नथिंग बट टू मेक अ मेटाबोलाइट पोलर आयोनाइजेबल एंड हाइड्रोफिलिक. ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, बहुत सारे, हर एक का अलग अलग. बाकी कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर है जो मैंने पढ़ा है, ऑक्सीडेशन जैसे होता है रिएक्शन, सब इसमें सिर्फ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे कुछ ड्रग है, उसका मेटाबॉलिज्म देखिए. जैसे फिनेटोइन है, फिनेटोइन इज एंटी इपिलेप्टिक ड्रग, उसको मेटाबोलाइज करेगा CYP2C19 एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. देयर विल बी रिजल्ट ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी फिनेटोइन. सो पैरा हाइड्रोक्सी फिनेटोइन मींस ऑन दिस बेंजीन रिंग देयर विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो मैंने बोला था ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, पोलर ग्रुप ऐड होगा, इस पे हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है टू मेक अ दिस नॉन पोलर कंपाउंड टू द पोलर कंपाउंड. दिस इज अ lipid soluble compound, now this is a water soluble compound, just by introduction of this hydrogen. Who is doing this? This enzyme is doing this, and whatever this enzyme is doing is nothing but the metabolism. Is that clear? वैसे ही हो रहा है आपका बाकी ड्रग का. ये these kind of drugs are, वारफेरिन का कैसे होता है, एम्फेटामाइन का कैसा होता है, प्रोपेनॉल का कैसे होता है. प्रोपेनॉल का भी यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी, यहाँ पे जो है प्रोपेनॉल का 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है, जैसे वहाँ पे किया ना फिनेटोइन में, उससे उसका यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है और उसका रिमूव कर दीजिएगा, बाद में पोलर बनता है.